everyone. Welcome back to yet another Friday for Waters, an initiative of the W4W Foundation, a think tank built as a citizens collective. We welcome you to today's session, Friday Waters, which is a continuation of the signature series, Wednesday for Water. The activities initiated as a series for Friday Water includes Water Talkies, Water Reading Club, Water Thesis Club, and Water Arts. Each of these sessions take place once a month. The idea is to bring water knowledge available in various alternate forms at one place to highlight the challenges related to water and increase the outreach in the water network as well as the society at large. The Friday Water sessions are designed to be fun-filled and fruitful. To learn about water matters, keep following us at www.w4w.in for regular updates. So we have today with us Mr. Abdul Rashid Bhat, an engineer by profession and also a filmmaker, a documentary filmmaker. He has produced many documentaries on issue-based cinema, especially environmental issues. Currently, he is working as an educational multimedia research center, the University of Kashmir since 2005. He has produced various documentaries, 100 e-content modules, 800 learning object repositories, and 125 educational television programs for Consortium for Educational Communication, CEC, New Delhi. In today's documentary on Dal Lake, titled The Bitter Truth, he has won the Green Filmmaker Award 2016 from Woodpecker International Film Festival and Best Documentary Award from APJ International Film Festival. It was also nominated for the Best Documentary and Best Director in Picker Flick Indie Film Festival, PIFF 2017, and also won the Viewers' Choice Award for Picker Flick Indie Film Festival 2017. He has also won the Best Documentary Award at Mysore Water Film Festival. To do the honors, beside this, he has made a number of documentary on climate change and other social issues related documentaries. To do the honors, we have with us Anuja Bali as a discussant. So Anuja herself comes from an advertising and film production background. She has a master's degree from George Mason University in special education, focusing on mild to moderate disabilities. She is passionate about educating students, teachers, and parents about climate emergencies, connecting all activities to SDGs, and advocating for sustainable living by adopting a zero-waste lifestyle. As a student of Nadi Ke Pathsala, she is part of the Ram Nadi Revival Movement in Pune and represents Maharashtra in Wiki Water Resource Council. She is also a core member of Warrior Moms fighting for our children's right to breathe clean air. Over to you, Anuja. Thank you. Thank you for the most flattering introduction, Rajkumari Sunita Devi. Hello, everyone, and I welcome you all. Let me first introduce our lovely moderator, Dr. Rajkumari Sunita Devi. She works as an additional CEO for a state-level nodal agency for watershed in Manipur. She has PhD degree in wetlands and remote sensing with a focus on Ramsar site. In the name of the site is Dal Lake in Manipur. She is also a Halbert Humphrey Fellow, Fulbright Fellow of Cornell University, New York. In 2008-2009, and her focus area was on wetlands and climate change. So thank you, Abdul Rashid. Thank you, Dr. Rajkumari, for this yet another session of water talkies, where we are going to discuss a film that is centered on water body. And I'm super excited that engineer Abdul Rashid Bhat has agreed to share his journey in making the film Dal Lake, The Bitter Truth. And he's here with us today on Friday Waters, and it is our honor to welcome you. So welcome, Abdul Rashid. Let me tell you a little about the film, The Bitter Truth. It is about
it discloses the losing battle between the locals and the authorities. So Dal is the heart of Srinagar city and Kashmir's tourism per se. From a majestic vastness of tens of kilometers in the ancient times to 25 kilometers in the recent past and reduced to a meager 11 kilometers today. Dal is asking for all the attention that is possible. It is a heritage that we are losing to pollution and greed. The Bitter Truth is a film that looks at the plight of the Dal Lake from a different point of view. In spite of the talking, um, you know, the infestations, the film looks at the faulty policies and the ongoing unsorted battles between the Dal dwellers and the authorities. The result is that the attention that Dal should be receiving is being diverted to sort issues of different stakeholders. And the sufferer is the lake, of course, and the people. So a lot of funding has been diverted towards the protection and conservation of the lake, but the outcome does not show on any level. The lake is falling prey to greedy people, farming, sewage, and weeds. This film is a responsible attempt to bring forth the problem that the lake is facing and to generate awareness about the lake. The film tackles the faulty policies that are being used for the conservation but are ending up hurting the lake in this process. Rehabilitation of Dal Lake dwellers is a top priority in policy, but its weakness is making the dwellers to choose to come back to the lake. It seems more of a wastage of time and money while Dal is silently moving towards a silent death. While looking at the issue, you cannot decide whose side to be on, the dwellers or the authorities. What we are forgetting throughout is that main protagonist, the Dal, is missing from action. So here we start, and I would request Abdul Rashid to please share a very amazing video. And actually, we are kind of showcasing that video for the first time. It has not been premiered anywhere before. And this has a very amazing lineup. Grammy Award winner Ricky Tej has offered to collaborate with Abdul Rashid when he met him during a film festival. And so this video was made. So we request you, please play the video. Thank you. Are you getting? Yes. You can make it full screen. Are you able to see? Yes. Yes, loud and clear. And we can hear the video also. So thank you.
Thank you. Thank you so much for watching. Thank you. It was beautiful. आप अब स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया वीडियो था ये बताने के लिए साइलेंटली विदाउट एनी वर्ड्स की क्या हालत है, क्या गंदगी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. थैंक यू. सो हम सबसे पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे अब्दुल राशिद कि why did you make this film the bitter truth. आपको क्या इंस्पिरेशन थी, क्या कारण था, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्री जब मैंने शुरू की तो इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली क्या थी कि मैं एक बार जब दिल्ली से वापस आ रहा था तो उन दिनों मतलब आपको पता ही है कि हालात खराब थे, तो मुझे डल से ही आना पड़ा थ्रू मतलब हाउस बोट या बोट के जरिए से मुझे वापस आना पड़ा. तो जब मैं जहां से मैं डल लेक से आया बोट में आ गया तो मैंने सिर्फ वीडियोस देखे और जो डल की इंटीरियर जो हालत देखी वो बहुत बदतर देखी. मतलब उससे पहले मैं डल देख रहा था, जैसे आप लोग भी बाहर से आते हैं तो आप अगर बिलवाड़ रोड से देखेंगे तो 200 मीटर्स के आसपास जो रोड साइड से है वो वाटर क्लियर क्रिस्टल वाटर दिख रहा है. तो मुझे भी ऐसा ही इसका ये था आइडिया था कि शायद डल ऐसा ही है. लेकिन उस दिन जब मुझे मौका मिला इंटीरियर ऑफ द डल लेक तो मैंने जो पाया मैंने कहा नो इट इज नॉट लाइक दैट. डल इज लूजिंग इट्स बैटल. इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं. सो आई हैव टू गो फॉर इट. मुझे इस पे आप रिसर्च करना पड़ेगा कि मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और मैं इंटीरियर में चला गया. तो इंटीरियर में चला गया तो वहां पे मैंने जब लोगों से दरियाफ्त किया कि जब व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ NIT श्रीनगर, क्योंकि आपने पता होगा कि NIT श्रीनगर इज ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डल लेक. तो वो डल लेक के बैंक पे था. तो बहुत पहले बिकॉज आई एम फ्रॉम 1994 बैच, तो उस वक्त उसकी हालत तो ठीक थी एटलीस्ट, क्योंकि लोग उस वक्त क्या थे वो कहते थे कि हम पहले जमाने में इसका पानी पीते थे. वी वर यूजिंग दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. तो लेकिन जब 2016 की मैं बात करूंगा, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री शुरू की और जब मैं इंटीरियर में चला गया तो मैंने लोगों से पूछा कि अब इसकी हालत ऐसी क्यों है कि हर एक जगह पे मैं वाटर की वो क्वालिटी नहीं देख रहा हूँ, वीड देख रहा हूँ, पोल्यूशन देख रहा हूँ, तो क्या मसला है. तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली 2014 में जो फ्लड आया मेन जो कॉज है, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को इससे पूरा ये कहा कि इससे आप दूर ही रहिए कि जो आप मकान बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मकान भी गिर गए लेकिन उनको फिर मकान भी नए नहीं बनाने दिए गए. उनको जो वाटर जो लेवल हुआ करती थी उस वक्त तक 2014 तक, मान लीजिए वो 7 फीट हुआ करता था फॉर एग्जांपल, तो वो आराम से वेजिटेबल्स वहां पे करते थे अपने तरीके से, नदरू या बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है, बिकॉज देयर आर सम फ्लोटिंग गार्डन्स इन इट जिनको हम वेजिटेबल गार्डन्स कहते हैं. तो वहां पे वो वेजिटेबल्स का भी बहुत जो पूरे श्रीनगर सिटी में जाते हैं
तो वो आराम से बनाते थे वहां पे। तो लेकिन जब 2014 का फ्लड आ गया तो उनको गवर्नमेंट को एक चांस मिल गया, उन्होंने इसकी लेवल हाई रखी। अगर उसमें पहले 7 फीट हुआ करता था तो उनको जमींदारों को पता था कि 7 फीट इतना है, तो वो अपने फ्लोटिंग गार्डन उसको फिल करते थे अकॉर्डिंगली। तो लेकिन जब 2014 फ्लड आया तो उन्होंने 9 फीट इसमें ये रखा। तो 9 फीट से क्या हुआ कि जो वो उनकी जमीन थी, वो जमीन मतलब वो पानी के नीचे आ गया। तो उससे क्या हुआ कि लोग जो वहां के थे वो बहुत परेशान हो गए कि मतलब जो डल डेवलपर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि वी हैव टू रिहैबिलिटेट यू पीपल। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैं ही ज्यादा बताऊंगा तो हम बताएंगे भी और आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कि लोगों को इससे क्यों नफरत हो गई। मतलब जो डल डेवलपर्स थे, दे वर द सेवर्स। वो मैं खुद भी मतलब गवाह हूं इन चीजों का कि मैंने खुद देखे हैं कि वो जो वहां पे मतलब जो उनके अपने फ्लोटिंग गार्डन्स हुआ करते थे, वेजिटेबल गार्डन्स, वही ये वीड्स निकाल के उनको एक खाद जैसे इस्तेमाल करते थे। तो जो दे वर नॉट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड्स और एनी अदर दिस मैन्यूअर, तो वो वही खाद वहीं बनाते थे और वही उसमें यूटिलाइज करते थे। लेकिन जब उनको रोका गया, उनकी ये भी मैंने फिर ड्यूरिंग रिसर्च सुना कि उनकी जो किश्तियां थी तकरीबन 500 के आसपास, उनकी किश्तियों को भी तोड़ा गया, क्योंकि उनको ये कहा गया कि यू आर द एनक्रोचर्स, आप इसको बचाते नहीं हो बल्कि आप एनक्रोच कर रहे हो। बट आपको पता है कि अगर हम में भी लोग होंगे, हम में से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अगर जमीन देखेंगे कहीं पे बेकार की जमीन है या कुछ, दे टू विल एनक्रोच इट। मगर इनके साथ ज्यादती हो गई। तो आप ज्यादती का जो विजुअल्स है हम एक एक करके हम जानेंगे कि इनके साथ क्या ज्यादती हुई, तो उसका फर्क क्या पड़ा डल लेक पे। क्योंकि अगर उससे पहले कोई अथॉरिटी नहीं थी, these were the Dal developers who were responsible for cleanliness and rest of मतलब पूरा जो कंजर्वेशन ऑफ डल लेक था वो इनके ही हाथों में था। तो इतना जो अभी मैं देख रहा हूँ इस अगर डल लेक की जो हालत है वो वैसी नहीं थी। So we will start from one video, then we will accordingly have a discussion on that and we will go accordingly ahead. Yes, sure. अब फुल स्क्रीन कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। A number of works have been carried out to ensure that we are able to reduce the pollution load on the lake. आज ताई डालस पे अरब बद रुपये खर्च कर, मगर डल जन पन हुस्न खूबसूरती तो पत काल ये रचरावन आई न जिम्मेदारान अमल वर्ताव कहें। Dal is in misery, and so is Zuna, a dull dweller, illustriously weaving mats, commonly known in Kashmiri as wagu. For Zuna, the responsibility of her ailing husband, unemployed son, and 2 unmarried granddaughters are a driving force to carry on. Despite its own ailments, it's still the lake that is driving her forward, being the source of the fiber for her mats. मगर आखिदा यो सियासी सख्ती कर न बनाने तो बेचना ज़रातस आजमनी के नस्ती ही ताताई 5-7 साल सोत कर या पोर हम बड़ी साला पत तो वहाँ अन्य हम ऐसी हिल विल गई खाद ये नाल वाले कर हम साफ सुथरा हुआ था आजमनी है भी सब्जी ताचवना तो ऐसे क्यों पूरा तो नसे ये मुट्ठी गुप्पति को रुक था या पर को रुक था ना चेस ब्लीहन जाए ना चेस किया कत मुसीबत में फंसे इस खबर सोइनस फलाइस इस कत मच ने जो वसुम जित बाय
Sujudu. But I thought I didn't wish it was calm. The guys all wish it all. We get us when I wish it. Should we get to my color? Man, yeah, that kind of rude. Let's get on that so bad. Lauda never fails to advocate that the Dal dwellers are the real culprits, but its own policy and laid-back approach seem more poisonous for the lake. It is very disturbing. It is really disturbing. So you can imagine myself. क्योंकि मैं जब field में जाता हूँ, I am basically not a documentary filmmaker or any filmmaker who is making films like मतलब any film actor. I am making documentaries on issue based. I can give you a small example. In Kashmir University itself, we are having a one famous Nasim Bagh, a big chinar trees where around 650 big chinar trees are there. And imagine if in autumn season, these leaves are falling down and people are burning them, how much air pollution will be there? And that too for 3 consecutive months. Imagine every day, 650 big chinar trees and falling of leaves, then burning them down. What will be its impact on environment, human health and climate change? Nobody was listening to it, or किसी ने भी कभी भी इसके बारे में देखा भी नहीं. Then in 2014 and 15, when I saw that particular thing, and I made a documentary, Don't Burn Leaves. And the impact of that documentary was when I shared that documentary with the tourism minister of our state at that time in 2017, next day leaf burning was banned all over J&K state. So wow. that is the main reason. That is the main reason of myself to make these type of documentaries. So same is the case with this particular The Bitter Truth. क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि लोग YouTube पे या बाकी चैनल्स पे वो अगर वीडियो बनाते भी हैं डल लेक के बारे में या इवन फॉर कश्मीर, तो आप देखी होंगे कि कश्मीर की वो खूबसूरती दिखाते हैं, but nobody is showcasing you the other side of the Kashmir. We are talking about the heaven on earth, but I can tell you there are so many such issues in which we can say like this is a garbage valley. I can tell you. तो इसलिए क्या है कि जैसे ये डल लेक है, अगर हमने अभी, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट्रीज और जो हम टॉक कर रहे हैं, अगर हम इस पे किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच गए जिसे हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि आप कहाँ पे गलत हो, आपको क्या करना चाहिए. क्योंकि I have been in the now with the government from few years because they are watching my documentaries, they are utilizing those for mass awareness. तो मैं रिसेंटली अपने डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिला हूँ, स्पेशली रिगार्डिंग दिस डल लेक, कि मैं कह रहा हूँ कि यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट सिटी, बट दिस इज योर मेन वी कैन से द फेस ऑफ द स्मार्ट सिटी. तो अगर इसकी हालत ऐसी है जैसे अभी जो रिफ्ट चल रहा है बिटवीन डल डेवलपर्स एंड द अथॉरिटी, इफ इट विल रिमेन कंटिन्यू, सो वन डे विल कम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर की कली जैसे फिल्म बनाई गई थी डल लेक पे, तो हम आजकल वो सिर्फ टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं, तो ऐसा ही इस डल लेक का भी हाल होगा. तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो. तो इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे क्या, मतलब और कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि ये जो डल डेवलपर्स हैं ये क्यों एनक्रोचर्स हैं, हम ये पहले बता देंगे. तो मैंने आपको पहले थोड़ा बता दिया कि इनको ये कह रहे हैं कि जो आप इसमें से जो आप वीड्स निकाल रहे हैं या बाकी, तो वो शायद आप अपनी जो मकान है वहां पे, क्योंकि दिस इज द ओनली दिस वाटर बॉडी इन विच पीपल आर लिविंग इनसाइड द लेक. मतलब उनके पास कागज है इस लेक के, आप देख सकते हैं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है. Otherwise, I am having those type of visuals also in which you will see the concrete buildings, concrete land. जो मतलब interior of the this water body, you will see the concrete land mass. तो जहाँ पे इन्होंने अपने concrete मकान बनाए हैं, तो इनके पास कागज हैं उसके. तो लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें उस तरीके से इन लोगों के साथ भी पेश आना है ताकि अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि they are the encroachers, they are responsible for its deterioration,
तो हमें वो चीजें देख के इनके साथ सलाह मशवरा करके हमें इनको साथ लेना है, क्योंकि इनके बगैर डल को कोई साफ नहीं कर सकता है। तो इनके तो जो नेक्स्ट हम अब दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि इनको बताया गया है कि हम आपको यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इसीलिए इनको फ्लड के बाद जो रोका गया कि आप मकान नहीं, अगर आपको मकान गिर गया है उनको आप रिनोवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि आप क्या करते हो, एनक्रोच कर रहे हो। तो वी आर गोइंग टू रिहेबिलिटेट इट, यू पीपल वी आर गोइंग टू रिहेबिलिटेट। तो ये कम से कम 10,000 फैमिलीज है, so they have to rehabilitate around 10,000 families to some other place. अब बहुत अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा है जिससे इन लोगों को रिहेबिलिटेट ऐसी जगह पे कर सके जहां पे ये खुश रहेंगे, क्योंकि मैं भी चाहूंगा अगर मैं किसी वाटर बॉडी में रह रहा हूं तो मैं क्यों चाहूं कि मैं किश्ती में जाऊंगा अपने मकान तक या अपने घर तक। मैं भी चाहूंगा ना आजकल के जमाने में मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, आई शुड हैव एवरी livelihood options, I should have the school facility, hostel. So मैं भी पसंद करूंगा ऐसी जगह पे जाने की। लेकिन आप अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनके साथ जो रिहेबिलिटेशन जो इनको दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन कहाँ पे आपको कर रहे हैं, you go ahead, we will go for that video, then you will see yourself, you can imagine yourself कि क्या लोग पसंद करेंगे अगर मैं ही होऊंगा या आप लोग होंगे कि अगर आपको उस जगह पे रिहेबिलिटेट करने के लिए कहा जाएगा, क्या will you accept that rehabilitation place? So please have a look on that particular video. Yes, please. Thank you for sharing. और मैं आपको जब तक आप वीडियो शेयर कर रहे हैं ये भी बताना चाहूंगी कि काफी सारे हमारे गेस्ट ऐसे ज्वाइन हुए हैं जो खुद जम्मू कश्मीर से हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो सब लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर पा रहे हैं। सो प्लीज शेयर दैट क्लिप। Great, thank you so much. Lake Authority has been given the mandate to make Rakhart Colony, which is a colony, huge colony, a beautiful colony that is coming up in Bimina, where we are going to construct 10,600 plots for rehabilitation of the Dal dwellers. The colony is being developed with wide roads, which no other colony in Srinagar has, which has all other facilities which should be available, with a park in every bay, with facilities like schools, like hospitals, public health centers, graveyards, or shopping areas. All these areas would be taken care of. That is all part of the project, but it is time consuming. Backyard is a wetland. Okay. Now, unfortunately, in this state, the wetlands are being treated as wastelands, and we saw its consequences in 2014 floods. Since the inception of the rehabilitation policy, only 700 families have actually been shifted to Rakhart, and more than 9,000 families are yet to be shifted. I'm going to welcome to Bismillah. I'm going to welcome to the shifting. I was near Dois near her up the latches natic, one chance has a natic, one sass and natic. That was anybody. As what Zabay asked us. Nama Chalagan, Fedaya, Sonia's Christmas was. Shurias near a Mozui, even began on the work when you stayed at it. I kept here, the fun campaign, I split get what I wish. I bet Bassawish, Jinski Mokney. You guys on a Jinki carry. The very few families they have rehabilitated, rather relocated, complain that they have been pushed into a hell of sorts. Makan bana chukma makan sa basaki. Ibara mein rakha to sati makan. Magar kya chhe bas. Makan ko crack, makan ko damage, bhawaja ko makan damage, call the wajah se. Zab yum pak makan chas. Pak makan mo chudara cha. Yum makan as se pet pe. Aso ayal bachao le khazo. But bachu bachao le khazo so ni makan le thi. Bahut bhai dal sa wapas bas. Trisha yum makan hala charge. Mane damage so worry wo. Agar daniya kya hoga बहुत देश आया है सब ताई में वाला बस आया उसमें जो कुछ मत कराएं बात अगर तक जमीन गुजरात में क्या हुआ सुसाम सो वही है ना सुनो क्या बच्चों ऐसे रोजगार आपको साथ होगा जॉब पे जॉब
Lake Authority has been given the mandate. A hell of salts. मगर क्या है मकान को क्रैक मकान को डैमेज भवोजन को मकान डैमेज कॉलनी वाली जब ये पक मकान पक मकानों में जो डाला था ये मकान से पेट पे अच्छा आयाल बचाव ले खतरो पालन बचाव ले खतरो तो ये मकान है थी बहुत बे डाल वापस बस तो ये मकान हाला क्या है डैमेज तो वरी वो अगर दानिया क्या होगा बहुत गैस आयाल सब ताई में बस आयाल जो कुछ बस कराएं बात अगर तक जमीन ज़राअत उसके हम सुसाव सो वरी एक ना कौन सुनो क्या बच्चों ऐसे तो रोजगार आपको साथ तो मेरा जॉब पे जॉब ठीक है This is alarming and of course जैसे कि आप कह रहे हैं अब्दुल राशिद कि लोग ब्यूटी दिखाते हैं you know I think पुरानी स्टॉक फोटोज दिखाते हैं शायद अब तो डल भी इतनी गंदगी से भरी हो गई है और ये जो रियलिटीज है वहाँ की हमें कभी पता ही नहीं चलेंगी बिकॉज हम हर जगह हर वक्त तो नहीं पहुंच सकते सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इसे डॉक्यूमेंट किया है और ना केवल आपने सिर्फ लोगों से बात की है बट अथॉरिटीज से जो रहते हैं जिनकी लाइवलीहुड्स इम्पैक्ट हुई है उन सब से बात की है सो आगे बताइए कि आप क्या शेयर करना चाहेंगे पहले मैं थोड़ा बहुत इसको भी इलाबोरेट करने जा रहा हूँ जो ये रख्या औरत है जैसे अभी आपने एक्सपर्ट्स का भी देखा कि दिस रख्या औरत इज बेसिकली अ वेटलैंड तो आप अभी जैसे आप में से एक रामसर साइट से भी ये रखते हैं मतलब ये तो रामसर साइट्स वेटलैंड्स आर रामसर साइट्स आल्सो तो कैसे हम इजाजत पहले गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैसे अलो करते हैं कि एक वेटलैंड को यूज किया जाए फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस सबसे बड़ी बात तो वही है ना और यू कांट इमेजिन दैट दिस टाइप ऑफ जो वेटलैंड जहां पे ये इनके मकान बनाए गए तो किसी का एक और एड है वो भी वेटलैंड है वहां पे गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो भी वहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं तो जब सैलाब आ गया 2014 में तो उसने पूरा अपना रास्ता दिखाया कि मैं कहां से था तो पूरा उस वक्त पता चल गया सबको कि मतलब ये क्या तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो नेक्स्ट आप इसका आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर रख्या औरत कि मतलब क्या ये ठीक है फिजिबल क्योंकि गवर्नमेंट हैज बीन मतलब अपॉइंटेड फॉर टेस्टिंग इट्स सॉइल जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं क्या इट इज फिजिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस तो आप नेक्स्ट में वो देख लीजिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि इन लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि मैंने क्या किया जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई पहला मेरा स्क्रिप्ट एक था लेकिन जब मैं फिर मतलब जो अथॉरिटी वाइस चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर डल लेक से मिला जब उन्होंने इंटरव्यू मुझे दे दिया तो उन्होंने जब बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं तो मैंने उसी के मतलब उसको एक साइड पे रखा और दूसरे साइड पे फिर लोगों को रखा डल डेवलपर्स को और एक्सपर्ट्स को कि क्या जो अथॉरिटी कर रही है वेदर दैट इज वायबल और नॉट तो नेक्स्ट है ना वो यही आप इससे आपको पता चलेगा कि एक्सपर्ट्स की व्यू से जो रख्या औरत में जो रिहैबिलिटेशन जो स्पेस दी गई है क्या वो सही है कि नहीं है बिल्कुल आज तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स और सब लोग बहुत ही हार्ट ब्रोकन होंगे डेफिनेटली बट थैंक यू फॉर शेयरिंग द रियलिटीज We have a problem with shifting to Rakhat colony but I am sure that we will be who have a problem with shifting to Rakhat colony, but I am sure that we will be able to provide to them a good colony, good facilities where they can lead a better life than they do in the lake. At the same time, I have also recommended to the government to do something about the livelihood. We have a program which we have prepared, which is under submission to the government with regard to livelihood, where they could be given certain skills, vocational training, some technical skills, in view of what expertise they have or what expertise they already have, what expertise they already possess, maybe some soft loans, maybe some incentives in order to start some kind of business on their own. So we are trying to look at that also. मगर ताकि और बड़ा वो जमीन वो ज़राअत वो तुझी दर बुला सुमन वजह पर चोर वो अच्छा लागत लगा तो लिहाजा इन्हीं को यूर ये पलट है ताकि और सोचें जनाब
Ashwatam ladies, Yuma Subhasana, Korveshkaran, Gasveshkaran, Ya Sajivas Badan, Yumash Propia, Dvajana, Yechi Yamati Bakari. At Zemianas Kajito Artinuna. Kya, Artinuna, the pass on activities. The ISU, yet you was no yet you can't development yet. Call you was yet us train country, Kora Banu Kora Moswell markets. Monga is Zor Pomas Ferry, get a bus. The bus set on Mushkila. Yeli Timanasha facility, Tajantim Yan Wapas Salute. Yatim the Pahan Nasa is Basal Night. Yasaka Ashinaji Makane Garan. Asaka Argasan Dal Choices Zeminas, Achi Jiran Makane, at the second cup. Zeminas Target. Yaza Chitan Kotas Biatan Yedal Sima. Here, what we do is that we are shifting the people and then we are arranging things for them, putting them to misery. A program which would be very appreciable if things are arranged and people love to go there is made a misery for them so that they go and they are put in hardship, suffering on account of these civic amenities. So nobody likes to go. As per the recommendations of the National Institute of Technology, they have mentioned it is not fit for the construction, but some ground improvement techniques should be adopted. First of all, filling is there. Second, they have recommended raft and pile foundation. Also, we are living in an earthquake zone. Such type of structures cannot bear such type of loads, and there may be some settlement problems and number of damage can be occur at that time. And it is very difficult to make such structures earthquake proof. It is indeed a challenge both ways. So, can I have one question? Yes, Anuja? yes. That's it. My question is to you, like during the making of this film or during your struggle to showcase this thing, wasn't there any CSO who understand or activists in Kashmir, where the Dal Lake is, who understand the situation and try to, like oppose what is being done in the lake? Yes, you have raised a very excellent question. ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बहुत जगहों पे दिखाई भी गई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी फॉर मास अवेयरनेस, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा जो इम्पैक्ट इसका था वो ये था कि once our former governor Shri Anand Vohra he came to Kashmir University. There was a function at Kashmir University and it was a research based on research. When he came to Kashmir University, his first question to the audience, especially vice chancellor, then researchers and others was that, what you are talking about the research. When I came from Raj Bhavan to this particular place to Kashmir University, because from Raj Bhavan to Kashmir University, they are coming through this Dal Lake, because there is a one road, 4-shore road. तो वहीं से वो आते हैं, राज भवन से लेकर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं. तो उन्होंने पूछा उनसे कि you are having today a deliberation on the research, you are having a meeting on research, but I have never seen any research paper, I have never seen any documentary which can show me why this Dal Lake is deteriorating day by day. What are the basic reasons behind that? So everybody was silent there. There were environmentalists, there were researchers, Honorable Vice Chancellor was there, everybody was there, but everybody they were silent. But as I was an engineer and I was a technical expert, because I am giving the technical expertise to the mega functions of the university, like convocation and other these type of functions when any dignitary is coming to Kashmir University. So I was fortunately there when I heard this question from Honorable this Governor Sahab. I told him, sir, I made one documentary, क्योंकि उस वक्त मैंने ये complete की थी, मतलब just 3-4 months back. तो मैंने उनको कहा कि sir, I made one documentary which is showcasing why it is deteriorating day by day, what are the basic reasons behind that. Then he told me I would love to see that documentary and have a copy in Raj Bhavan. Then I went to Raj Bhavan along with that copy and keep that copy DVD to the Raj Bhavan people. And fortunately, after 15 days, I got a call from Raj Bhavan. And I was shooting at River Jahannam,
and I got a call from this Rajbhavan that they told me that Governor Saab has watched your documentary. He appreciated the efforts, and he first time saw the this reality about the Dal Lake, because उसको भी पता था आज तक कि डल लेक शायद इतना ही है, मतलब जो मेन रोड है उससे 200 मीटर्स तक, जो बाकी जो इंटीरियर स्टोरी है या लोगों की जो हालत है, nobody had told him till that day. And another talk, उन्होंने मुझे कहा कि this was the first time when Honorable Governor Saab visited this particular lake through helicopter. तो हेलीकॉप्टर के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट्री उसने देखी, उसने सारा पाया that was up to the mark. तो फिर उन्होंने कहा कि you just, because this was the 28-minute documentary, full documentary, then they told me that Governor Saab wants to have a full this of this 28 minutes जिसमें आपने हर एक टॉपिक को टच किया है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो elaborate करके हमें गवर्नर हाउस में चाहिए, so that we can go according to these type of recommendations for the conservation of Dal Lake. तो आप ये अनफॉर्चुनेट था हम कश्मीरियों के लिए कि उसके बाद ही ही वाज नॉट, मतलब वो नहीं रहे गवर्नर साहब, लेकिन उनका ईमेल अभी भी मेरे पास है जिसमें उन्होंने लिखा कि loss was mine. You can imagine एक गवर्नर साहब मुझे लिखना loss was mine, and loss was for the whole J&K, that we were not able to, I was not able to go for your recommendations because I am leaving now Kashmir. तो लेकिन उतना ही नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा कि बस इतना ही मैं छोड़ूंगा. उसके बाद रिसेंटली मैंने जो यहाँ का डिविजनल कमिश्नर साहब, उनको मैंने पूरी पहले डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता दिया, तो उसके बाद first time I was able to understand him कि the condition of these Dal dwellers, तो मैंने उनको वहां पे ले लिया रख औरत. Imagine कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को रख औरत में ले लेना और वहां से उन लोगों के जबानी उनको देखना कि उनकी हालत कैसे है. That was the reward of my this documentary. कि मतलब मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की और उन्होंने वहां पे मीटिंग बुलाई उसी रख औरत में, और हर एक, जैसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वाज देयर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ वाज देयर, then Lauda का जो highest जो vice chairman, he was there, and all the authorities were there. तो उनसे एक एक क्वेश्चन जो मैंने उनसे बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है डल डेवलपर्स को और डल को, तो वो सारे उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया. तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, उस मीटिंग में आई वाज द लोन पर्सन फ्रॉम द, जो रिप्रेजेंट करता था डल डेवलपर्स को या जो लोकल्स वहां पे हैं, क्योंकि मुझे पता था सारी उनकी दास्तान क्या है और डल की दास्तान क्या है. तो मैं वहां पे एक चीज का सरप्राइज हो गया कि सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया. जैसे स्कूल्स में बात हो गई तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको कहा कि कितने स्कूल आपने 10,000 फैमिलीज के लिए रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी एक मिडिल स्कूल यहाँ पे है. इमेजिन. उसके बाद फिर कहा कि 10,000 फैमिलीज के लिए कितने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है. तो यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि कैसी कैसी बातें, वो खुद भी परेशान हो गया कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर है मेरे, कि मतलब अगर मेरे पास ये नहीं आता कि मुझे बताता कि यहाँ की इसकी हालत कैसे है और जिन लोगों को ये रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं उनकी हालत कैसी है, तो मुझे कहाँ पता चलता. तो फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है, आप 10,000 पीपल के लिए अरेंज कर रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्राइमरी हॉस्पिटल है. तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या वो प्राइमरी हॉस्पिटल क्या वो कोविड के दौरान चल रहा है? कहा नहीं, अभी वो शिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उसकी इनॉग्रेशन बाकी है. इमेजिन. तो क्योंकि मैंने उससे पहले जब कोविड था, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सोसाइटी को फायदा मिले, तो उससे पहले जो ये डल डेवलपर्स से ये मुझे बीच बीच में मिलते रहते हैं और फोन भी करते रहते हैं कि हमारी हालत कैसी है. तो उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान हमारा जो हॉस्पिटल है हमारी वो अभी तक चालू नहीं हुआ. देन आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर डिविजनल कमिश्नर साहब, मैंने उनको कहा कि आज के कोविड के जमाने में यू आर टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज, अबाउट द हॉस्पिटल, दिस एंड दैट, मगर ये जो रखारत में लोग जो रिहैबिलिटेट किए उनके लिए वहां पे दवाई भी अवेलेबल नहीं है और वहां पे हॉस्पिटल की हालत अभी वैसी की वैसी. देन ही कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ मी टू द डायरेक्टर हेल्थ एट दैट टाइम. उनको कहा कि जरा मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बताइए, तो उन्होंने उसको फोन पे ही मेरे बताया कि वी आर वेटिंग फॉर इनॉग्रेशन एट दैट टाइम आल्सो. तो उस वक्त भी उसने कहा कि लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, उसने उसको कहा कि बाढ़ में जाए आपकी इनॉग्रेशन, इस वक्त लोग मर रहे हैं और आप इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप पहले उस हॉस्पिटल को चालू कर लीजिए.
लेकिन आप क्या यही मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हम 1 महीने के बाद जो मैंने उनको वफद के साथ वहां पे लिया, तब तक भी उस हॉस्पिटल की हालत वैसी ही थी। तो फिर उन्होंने उसको फिर मतलब कहा वहां पे भी कि मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, मैं आप 1 महीने में हॉस्पिटल जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो बराबर जो 10,000 फैमिलीज अगर आप बता रहे हैं कि इनको हम रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, पहले क्या ये, फिर उनने अच्छी तरह से उनका हिसाब लेना शुरू किया। तो दैट इज योर क्वेश्चन, क्या आपने ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है या आपने जो आंखों देखा हाल आपने देखा है इन लोगों का, क्या आपने वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? मैं कोशिश कर रहा हूं और अभी भी इस पे लगा हुआ हूं। तो होपफुली रिसेंटली मैंने उनको यही कहा कि जो ये डल डेवलपर्स है इनको ही आप फिर से ये डल वापस दे दीजिए, किसी अथॉरिटी को आप रख लीजिए इनके ऊपर इनको ये करने के लिए। लेकिन अगर आप इनके हाथों में दे दोगे, आई एश्योर यू दैट दिस डल लेक विल बी रेस्टोर्ड टू इट्स जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पे आ जाएगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जब आगे आप जाएंगे, जो आगे वीडियोस हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस डल के साथ। जरूर हम नेक्स्ट वीडियो हमारा देखते हैं। लाइक आई सेड, सारे लोग बहुत ही डिस्टर्ब रहेंगे और हमें ये होता है ना कि हम इधर उधर सारी प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर में ही प्रॉब्लम है, हम वो ही नहीं देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब ये नई रामसर साइट अनाउंस होती है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन व्हाट अबाउट पुरानी रामसर साइट? हम उसको कत्ल करके आगे की रामसर साइट बना रहे हैं। क्या ये हमारा पॉलिसी या स्ट्रैटेजी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So we are blessed with so many sites and we must, work towards restoration. आप दिखाइए दूसरी क्लिप। I'm sure सबके पास बहुत questions होंगे। तो आप हम देखेंगे कि अर्लियर डल लेक, जो एक्सपर्ट भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं, पहले कैसा हुआ करता था डल लेक। जो लोग थे जो वहां पे थे वो कैसे इसको मतलब हिफाजत करते थे। Through Sashat Canal total vegetable land. Time kitchen river neat and clear was on. She to grow was na yet cost authority. Cost government excited cost authority. She to grow was neat and clear Dal. If you look at the water quality of this lake, even in 70s and 80s, in 70s definitely people were drinking this water without any treatment. If you look at today, and if you look at the nutrient loading of this lake, the phosphorus, the nitrate, the chlorides, they have increased by magnitude, by 5 times, 6 times, 7 times. Whether it is Lauda or the dwellers, at present both are failing the Dal. It is lying there quietly and dying an unnatural death. Dal ke jo saap previous zamanas mein dal ke subah koithit pathan at khel ko daisiye das ko daisiye at hilbo daisiye ye isin tular pe os nadur ye sari ko aham nadur chugala mariye das zot nadur se chudu gelzaras buz muches laran saban chudo pandi hidayat mein juna te yad ke par dalibi atam chu buz agar se dal voit nadur bajus soch batan shalmor Dalasim död nuri kar balantim sodag lalman az amchi waparchim pepper garzik nuri has on badness timai nutan chesim rosh thavim. आप देख सकते हैं कि जो पहले जो लोग थे ना, क्योंकि वो क्या करते थे एक्चुअली, उनके पास किश्तियां हुआ करती थी, तो वो अपने उनके घर में मतलब मवेशी भी हुआ करते थे और वो खेती बाड़ी भी करते थे। तो जो ये वीड्स आते थे ना इस डल में, वो सारा उठा के डल को साफ करते थे, वो किश्तियां निकालते, तो पूरा क्लियर क्रिस्टल वाटर हुआ करता था। और उन दिनों ये भी कंसेप्ट नहीं था कि जो वो डल में जो रहते थे भी, जो उनमें जो ये ड्रेनेज या लैट्रिन जो बाकी थी वो भी बनाते थे पहले जमाने तरह के। मतलब आजकल का फ्लैश टाइप का नहीं है कि आज सारे हाउस बोट्स का या जो ये डल डेवलपर्स है इनका भी सारा डल लेक नहीं जा रहा है। तो उनका कंसेप्ट क्या था कि वो एज मैन्योर यूज करते थे।
तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये डल डेवलपर्स थे, इनको पता था कि हमें आज यहाँ से निकलना है, कि तो हमें वाटर चैनल्स जो है वो साफ रखनी है ताकि हमारी किश्ती भी चलनी चाहिए। तो अभी आपने जो वीडियो में देखा कि कुछ ऐसे शॉट्स देखे कि जहाँ पे वीड ही वीड है तो पूरे। तो अभी आप नेक्स्ट जो देखेंगे ना, नाउ दे आर गोइंग फॉर द डिवीडिंग पर्पसेस, क्योंकि आप वीड आ ही चुके हैं, क्योंकि जो डल डेवलपर्स थे वो तो आप उनको काम करने नहीं देते हैं। तो अब जो डिवीडिंग इतनी सारी वीड्स आए हुए हैं, तो नाउ दे आर यूजिंग मेथड बाय, इन्होंने 2 मेथड्स के लिए यूज किए हैं, एक तो मैकेनिकल डिवीडिंग होती है और मैनुअल डिवीडिंग होती है। तो जो लोकल्स थे वो हमेशा, और जो एक्सपर्ट्स भी थे वो हमेशा कहते थे कि दे शुड गो फॉर द मैनुअल डिवीडिंग, नॉट फॉर द मैकेनिकल। क्योंकि आप देखना, अभी वीडियो में भी देखेंगे कि जो मैकेनिकल डिवीडिंग होती है उससे क्या होता है कि आप 1 साल के लिए क्लीन कर सकते हो और विद इन नो टाइम, मतलब डल को साफ कर सकते हैं, वाटर दिखा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर आप वो वीडियोस खूब फिर से आ जाएंगे। कि अभी आप देखेंगे जो लोग बताते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ शेव, मतलब आज शेव किया तो 10 दिन के बाद फिर से शेव वापस आ जाएगा, दैट इज द मैकेनिकल डिवीडिंग। लेकिन जो मैनुअल डिवीडिंग है, जो ये लोग जो डल डेवलपर्स जानते हैं, जो इसके माहिर हैं, तो इनको अब मतलब अब क्या आ गया, जब हमने ये बहुत सारे लोगों ने अब कहा कि ये प्रॉब्लम है, डल डेवलपर्स को इस्तेमाल कीजिए, मैनुअल डिवीडिंग एक्सपर्ट्स ने भी कहा, तब जाके ये फिर से इन लोगों को वापस ला रहे हैं कि अब आप मैनुअल डिवीडिंग कर दो, लेकिन साथ साथ में ये मैकेनिकल भी करते हैं। तो मैकेनिकल मुझे लग रहा है कि वो नहीं करना चाहता उस तरीके से जैसे ये करते हैं। तो अभी आप नेक्स्ट देखेंगे कि डिवीडिंग जो ऑपरेशन है वो कैसा है। जरूर। ऐसे कड़ा साफ इस डिपार्टमेंट थमस काम ठेकेदार जरिए ये कड़ा साफ ये पाया ने लेवन पतना ने लेवन पानी पर जो आया ने इस कड़ा ने मुंह अरे ये का मूल है डिपार्टमेंट ऑफ मकसद की कुछ क्वेश्चन 2 वेरिएंट पर साफ अच्छी वो 2 वेरिएंट पर स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन साफ 2 वेरिएंट जन मैनुअल डिवीडिंग अत मे बूम अत मे यन कशर पे वन बूम बोंड सह मूल कड़ तम पे पॉसिबिलिटी आसान कह सह पे जन वन ब्या मैकेनिकल डिवीडिंग तिम फॉर एग्जांपल शेव जन कर आज कोर इंसान शेव तो 8 दो सक्सेस पे आम वापस इथे कन अत मे उतमशन पर पॉसिबिलिटी आसान कि तिकाज अपरूटेड कर। We have a dearth of manpower when it comes to manual deweeding because this is a technical job. It is not something that anybody can do. You have to be an expert to be able to do this, which the dull dwellers are, and there is a dearth of labor when it comes to manual deweeding. There are also seasons. I would in fact say that there are experts who tell us that you should not carry out this manual deweeding at times and in seasons and give the lake bed some rest, because there are such microbes, there are such other things which are at the lake bed, which normally are disturbed and rise up when manual deweeding is carried out. So there are different times when different methods are used, and we are trying to make best use of them. As good through where you are done, istemal panas karan jam. Yar balon tales aap khara nal ko is jama don ki आज प्रात garas dahnal ke bahar. मगर तू वुचो डाल के सिद्धि खतर बनो जाहिरी लिया इन्हें इसने काम के शांत दिन में तेल ओस ये ऐसे छोग डाल सानि वही अनपर जिठव रथ रोव डाल परमत्यो ओलूद कोर होट चूरहस रच दरवी त्रेश पथरस पोव डाल। सो ये कहानी थी जो हम आपको बता रहे हैं कि अबाउट द डिवीडिंग, क्योंकि आप मान लीजिए अगर ऐसी डिवीडिंग क्यों अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इन लोगों को एज मतलब लेबर्स यूज करते हैं ये, जबकि ये खुद ही इतने सारे ये कह रहे हैं ना कि dearth of manpower is there. If there are 10,000 people, 10,000 families, so as my, क्योंकि मैं on the ground वहां पे गया हूँ, अगर इस वक्त ये मुझे बताएंगे कि कितने सारे लोग हैं जो इसको
अवेलेबल हैं फॉर डिवीडिंग पर्पसेस, तो मैं इनको हजारों की तादाद में लोग दे दूंगा जो इसको क्लीन कर सकते हैं, एंड दैट टू मैनुअल डिवीडिंग। एक और मैं बता सकता हूँ मैकेनिकल डिवीडिंग की डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे परिंदे रहते हैं, मतलब परिंदे उन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं। जो मैनुअल डिवीडिंग होती थी वो पहले देखते थे कि मे बी यहाँ पे कहीं पे जो परिंदे हैं, क्योंकि वाटर दीज बर्ड्स आर देयर, तो हम देखेंगे कि वहां पे कहीं पे, तो वो उसके साथ छेड़ते नहीं थे। लेकिन मैंने फिर लास्ट ईयर मैंने खुद ऑब्जर्व किया, देयर वर सो मेनी नेस्ट्स जो मैकेनिकल डिवीडिंग से ऐसे ही उछाड़ दिए गए, जिसमें मतलब बर्ड्स के जो छोटे छोटे बच्चे भी थे वो भी मर गए। तो या फिशेस आर देयर, तो लोगों को पता है जो मैनुअल डिवीडिंग करते हैं उनको पता है कि फिशेस कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, तो हमें किस किस चीज का ख्याल रखना है। तो दे आर द रियल, मतलब जो उनको यूज करना है। नो डाउट मैकेनिकल भी ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जहां पे इनको दे शुड यूज द एक्सपर्ट आई व्यू, जो ऑलरेडी वहां पे जो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं डल लेक के बारे में, जिनको नॉलेज है फुल फ्लैजेड, दे कैन यूटिलाइज देयर सर्विसेज, सो दैट वो उनको बता सकते हैं कि आपको डिवीडिंग कौन सी कैसी करनी है, किस तरीके से करनी है। बट मैं अश्योर करता हूं कि दे हैव टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द लोकल्स डल डेलर्स आल्सो। Yeah, that is traditional wisdom जो हम कहते हैं ना कि जब आपके Yes. पास छोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में, आपके पास वो एक्सपर्ट्स तो वो ही हैं जो डल ड्वेलर्स हैं, उनसे बेहतरीन कौन जानता होगा कि क्या अपने खुद के घर की सफाई कैसे करना है। सो यू आर राइट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो नेक्स्ट अब हम वीडियोस की तरफ ज्यादा ये करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस देंगे। नाउ डल लेक साइज के बारे में। Dal is quietly bearing witness to the fights of the people whom it provides livelihood to, and those who claim to be its saviors. Measurement of the lake was recorded by Lawrence in 1895, and as per those records, the area of the lake was about 25.7 square kilometers. And now recently we have had the satellite imagery done through the remote sensing department, environment and remote sensing, and Deputy Commissioner Srinagar has also used DTS machines to measure the size of the lake, and today it shows that the size of the lake is about 25.5 square kilometers. So it is almost the same as it was more than 120 years ago. Then when you talk about the water expanse, during Lawrence's time, it used to be about 18 square kilometers, and right now the water expanse is about 20 square kilometers. So the water expanse has not shrunk, but it has in fact increased as per these reports. Though the lake area has not shrunk significantly, almost same area, but what has changed, if you look within the lake, the water spread, which in 1859 was something like 23 square kilometers, is reduced to less than 11 square kilometers today. So you can see that they were telling that water expansion is more. You got it? So you can imagine से मतलब कैसी कैसी मशीनरी यूज की जाती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डल लेक, कैसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब दैट इज नॉट गुड। मतलब एटलीस्ट अगर आप बता देंगे कि मतलब वाटर एक्सपेंशन इतना ही है, कम हो गया है, तो ठीक है हम इसको एक्सपेंड करेंगे और तो उसके लिए हम देखेंगे, लेकिन ये नहीं बोला है कि वाटर एक्सपेंशन हैज बीन वो इंक्रीज, दैट हैज बीन इंक्रीज, इट शुड नॉट हैव बीन लाइक दैट। So now we will move to another. Shall we move to the next one? Yeah, sure. Mansi, do you have any question? Would you like to ask something or say something? We will go first one by one. There are few videos now, so Yeah, that yeah, after. please. Okay. I can see that Mansi has something to say. That's why I asked her. Okay. If she can. She can. Okay. We can go ahead first then. Abdul ji, quite brave of you, to make these kind of documentaries. So first of all, hats off to you that आप ऐसा काम कर पा रहे हैं, especially in a vulnerable situation like जम्मू कश्मीर। मेरा जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो शायद आप जानते भी हैं और हम सब जानते हैं, जब हम ये वेटलैंड्स को बात करते हैं और उसमें हम लोगों को डिस्प्लेस करके बोल रहे हैं कि हम नया इकोनॉमी लाएंगे विच इज टूरिज्म,
और ऑलरेडी 10,000 में से 700 लोगों को ही 700 फैमिलीज को ही डिस्प्लेस किया गया है. I don't see any option of really wetland rejuvenation if people are kept away from it, local people, जो आप भी कह रहे हैं. बट जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि लेक का लैंड एरिया उतना ही है, तो इसमें एक जो समझने की बात यह है कि लेक को हम जब लैंड से मेजर करते हैं तो हम एक्चुअली पानी से पूरा भरा रहेगा उसकी वो गारंटी नहीं दे रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. तो ये यहाँ पे जाके प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रीलोकेशन कर रहे हैं वो भी तो एक जमीन पे, वो भी तो वेटलैंड है. तो अगर वो उस वेटलैंड पे रह सकते हैं तो इस वेटलैंड में भी रह सकते हैं. तो मेरा जो आपसे सवाल है कि अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो लोकल मूवमेंट क्यों नहीं है वहां पर इस चीज को लेके कि रिक्लेमिंग द पीपल्स लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स विच विल रिक्लेम द डल लेक, बिकॉज डल लेक की जान लोगों में बसी है और लोगों की जान डल लेक में बसी है. तो ऐसा मूवमेंट क्यों नहीं है? You have raised a very important question और maybe आगे जो कुछ वीडियोस हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. I have already taken those questions with the experts also. लेकिन मेरा ये है कि जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना, जो मैडम ने भी कहा कि nowadays एक फोटोशूट का एक जमाना आ चुका है. मतलब लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि we are conserving this water body, we are conserving forests, we are conserving wetlands, we are conserving this natural resource and this and that. लेकिन एक्चुअल जो काम है वो कोई नहीं करता है. Because now I am witnessing this from last 10 years. कि मैं अकेला गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, जैसे आपने भी क्वेश्चन रेज किया है कि आप कैसे बना पाते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज. मैं आपको एक ज़मीनी एक एग्जांपल दे दूंगा कि I made one documentary that was on forest fires, green gold on fire. तो मतलब मुझे तो खुद पता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस they are taking my documentaries are on big like events like World Environment Day. So World Environment Day, that particular documentary was showcased before the government authorities, in which forest authorities were also there. तो जब वो दिखाया गया तब तक लोगों को पता है कि मैंने उसमें ये दिखाया कि 95% of forest fires are man-made, only 5% are natural. तो जो मैंने उसमें दिखाया कि हमारे जंगलों के साथ क्या हो रहा है, कितनी कटिंग्स हो रही हैं, पूरे जंगल सफाई वहां पे हुई है, सिर्फ मतलब उनके स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, बाकी इतने जंगलों को मैंने देखा, हजारों की तादाद में मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि हमारे जो इतने सारे जंगल हैं उनके साथ क्या हो रहा है. और 3 दिन कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट फायर्स होते रहते हैं. And we at the government level are using those traditional methods जो उसको बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. वही मिट्टी ऐसे उठा के, उससे क्या हो जाएगा? We are not using those type of bombing through helicopters, chemicals, this and that. So उसमें मैंने सारा कुछ वो दिखाया which we were lagging till date. तो उससे क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने वो देखा तो last year they planted around 1,30,00,000 plants. Imagine, in one single year, they planted 1,30,00,000 plants. और वही जो लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्री जब मैंने वो बनाई और जब उन्होंने देखी तो फिर उन्होंने मुझे शाम को फोन किया एक अथॉरिटी ने कि रशीद साहब आपने ये कहाँ से विजुअल्स लाया? ये एक एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ऐसी हालत है. रेस्ट ऑफ these forests are they are full with these plants. तो मैंने उनको एक डिस्ट्रिक्ट की बात बता दी, कहाँ पे. मैं आपको विजुअल्स भी दिखा सकता हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत है. इफ यू वांट टू सी, जो मैंने इसमें दिखाया हर एक डिस्ट्रिक्ट का हाल है, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है. देन ही वाज, मतलब उसने माउथ बंद किया और फिर उन्हें काम शुरू किया कि अब हमें प्लांट्स को ये लगाना चाहिए. एंड रिसेंटली लास्ट ईयर दिस ईयर दे कॉल्ड मी फॉर मेकिंग अ फिल्म फॉर देम. दे रोट टू आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर that we need a documentary from this particular person for what we have done for the conservation of these forests. Then I made the documentary One Bead God, One Village program, which was recently this year on World Environment Day in 2022, that was released and screened before the Honorable Governor Shri Manoj Sinha Sahab. तो दिस इज द रियलिटी अबाउट माय डॉक्यूमेंट्रीज. तो मैं एक मुहिम हूँ अपने तरीके से. तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी लोग जो देखने वाले हैं
या जो आप जैसे लोग हैं, तो हमें ऐसी कुछ ऐसा करना है कि हमें एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स बनने हैं, ताकि दूसरे लोग हमसे सीखें कि नहीं, ये सिर्फ फोटोशूट या बाकी वीडियो उठाना फिर यूट्यूब पे डालना या अवार्ड्स कमाना इतना ही नहीं है, बट वी शुड मेक सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, बिकॉज डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट रियलिटी, ये तकरीबन रियलिटी के सामने पास होती है। तो वी शुड थिंक दैट इन दैट वे कि इसका ये गवर्नमेंट के पास पूछना चाहे, अच्छे अच्छे लोगों के पास पूछना चाहे, और फिर इसमें एक मूवमेंट शुरू होनी चाहिए जिससे ये वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट या जहां जहां पे जो इशू है वो सॉल्व होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें आप देखोगे कुछ ऐसी चीजें, जैसे एक इसके बाद है देयर वाज ए हाउस बोट इशू, क्योंकि वहां पे डल लेक में बहुत सारे हाउस बोट्स हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ऐसे आप कह रहे हैं कि ये लोकल्स को क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, इमेजिन जो हाउस बोट्स की आप कहानी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी, they are utilizing the services of IIT Roorkee for the planning and conservation of Dal Lake. But I am having a question, IIT Roorkee people, are they knowing the ecology and anything about this particular Dal Lake? मेरा आपसे सवाल था ये, एक्चुअली अब्दुल जी मेरा नेक्स्ट सवाल ही यही था आपसे कि जब हम लोकल पीपल को डिस्प्लेस करके उनको बोलते हैं कि आप एनक्रोचर्स हैं, आपको नहीं आता है, और हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को एज एन एक्सपर्ट लाते हैं, तो उसका एक जो मेजर इम्पैक्ट होता है, और ये भी एक अर्बनाइजेशन का एक नेगेटिव अप्रोच रहा है हमारे यहाँ सिस्टम में, कि बाहर से आके एक्सपर्ट बताएगा कि क्या सही है, वेयर एज जो वहाँ लोग सब जानते हैं उनको हम साइडलाइन कर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एजुकेशन का। तो आपने तो इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया। अब ये वीडियो मुझे लग रहा है ये वीडियो ज्यादा अच्छा जवाब दे देगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन होता है कि हाउस बोट्स को हम रिलोकेट करना चाहते हैं, फिर आप देख लीजिए उनको कैसे रिलोकेट कहाँ पे ले रहे हैं। तो IIT रूरकी वाले कहाँ पे रिलोकेट करना चाहते हैं, और जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। जस्ट हैव अ व्यू। This is really shocking, huh? Houseboats are an important part of Dal, and sewage from these needs to be treated. A policy for relocation of houseboats has been created, but is that the right way to go? A program for shifting of the houseboats, which is these 380 houseboats in the front side of the Dal Lake. They are being shifted to Doldum. The project has already been approved by the cabinet. Let me tell you, Doldum area of the lake is where we have the maximum number of lake bed springs, which are responsible to contribute 30% of the lake water. Right now, the houseboats are at the tail end where the water is exiting. The pollution exits out of the lake from those areas. But if you take them upstream, then you are having an apprehension that any mishap can also pollute that area of the lake, and that would be a very serious pollution. These houseboats would be shifted to the Doldum area, which are 5 bays, and in these 5 bays, we will be able to put 76 houseboats in each bay having its own treatment plant, so that we are able to control the sewage that comes out of the houseboats as well. Government is thinking that they can handle the houseboats along the Doldum. Then my question is, why can't they handle these populations on the hamlets? Give them the sewage treatment there and let them remain to the extent you want to keep them. Why are you relocating them? I mean, we remove half of the landmass from the lake and then move these people into the other half. Densified. We are saving the lake, we are increasing the open waters of the lake, and at the same time, we are putting the same people in the other part and providing them the STPs, providing them, linking them, their livelihood to the tourism activity, providing them with more environmental friendly livelihoods. Hope you got the answer, ma'am. This is the reality about this thing. Yes. They are That's utilizing the reality everywhere. Abdul ji, that is the reality in everywhere. And this is where I feel embarrassed when we get external expertise to do some work in some other place, and when we really don't value the local expertise and don't even value the local people who have been living there for centuries. So this is really shocking, and I'm not surprised, to be honest. So it is very much a land grabbing and water grabbing exercise by the new development
policies we have or new development approach we have taken. Unfortunately, all the wetlands are facing the same problem. We had some weeks, months ago, we had Loktak Lake discussion, and it was not different, to be honest. क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अदरवाइज जिस 28 मिनट डॉक्यूमेंट्री अगर आप फुल फ्लैजेड पहले से देख लेते हैं ना, तो आपको ऐसे ऐसी कहानियां इसके बारे में आ जाएंगी जो मतलब आपको वो बता देंगे कि क्या हो रहा है, हमारा जो हाल है क्या हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा क्योंकि नाउ आई हैव बीन इन दीज विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। रिसेंटली दे सेंट मी वन ऑफ द स्मार्ट सिटी मीटिंग। तो स्मार्ट सिटी मीटिंग जब चल रही थी तो वहां पे उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग दिस थिंग, वी आर डूइंग दैट थिंग। तो उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स को, जैसे आपने वो इस आपके क्वेश्चन के साथ ही है, बाहर से लाया था और उनको कोविड के दौरान वो एक असाइनमेंट दी थी कि आप हमारे इन सारी जो स्मार्ट सिटी रिलेटेड जो ये है ये हमें आप दे दीजिए। एंड दे मेड अ बुकलेट, और उस स्मार्ट सिटी मीटिंग में वही उस दिन वो लॉन्च करने जा रहे थे। तो इमेजिन कि उस दिन जब उन्हें सारा खत्म कर दिया, एंड देयर वर सो मेनी एक्सपर्ट्स फ्रॉम आवर एंड आल्सो, जो एक्सपर्ट्स अपने आप को कहते हैं कि हम भी एक्सपर्ट हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बट एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग देम। जबकि मैं देख रहा था तो सब लोगों ने जब इसको बोलते हैं साइंटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब्दुल जी, तो जब सारा खत्म हो गया ना अब मामला, मैंने सोचा कि अब कोई बोलने ही वाला नहीं है। दैट मींस दिस बुक विल बी नाउ लॉन्च्ड, मतलब इट इज इन प्रैक्टिकल शेप एंड इट इज अप टू द मार्क। तो अचानक उनमें से एक हायर अथॉरिटी को ये निकला कि किसी और को मत कुछ कहना है। तो आई वाज देयर, तो मैंने कहा हाँ मुझे कहना है। तो उन्होंने कहा क्या कहना? मैंने कहा कि जो ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है इट इज टोटली ये कुछ है ही नहीं जो आप दिखा रहे हैं। ये तो अगर आप ऑन द ग्राउंड जाएंगे, व्हाट आई नो इट इज नॉट लाइक दैट। सारा कुछ मैं थोड़ा आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा, कुछ जो इसमें मेंशन है, ताकि सारे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे पास हमेशा विजुअल साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें एक मुझे बहुत एक मतलब जो बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि यू कैन शो इट। तो मैंने सिर्फ 2 वीडियो उनको दिखाए। सो यू कांट इमेजिन कि उनको इनकी जो वो डॉक्यूमेंट बनाने वाले थे, इनको इनकी एम्बैरेसमेंट हो गई कि उन्होंने कहा कि आपने कौन सा रिसर्च किया है, अभी तो हमने सिर्फ 2 विजुअल्स देखे, कौन सा? उन्होंने कहा कि चूंकि कोविड था हम कश्मीर नहीं जा पाए, हमने ऐसे फोन पे एक्सपर्ट से वहां पे बात की, हमने गूगल से सर्च करके ये बना दिया। तो देन दे टोल्ड हिम दैट दिस इज टोटली रॉन्ग, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो दिस इज द ब्यूटी कि एक इंसान कुछ बोलना चाहिए जब उसने देखा होगा ना ग्राउंड रियलिटी, तो वो दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि बस चुप करके बैठो और सुनो। मतलब गवर्नमेंट भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती है कि वहां पे सब लोग ऐसे होंगे जो आपको पकड़ेंगे। मैं ये कहूंगा कि जो भी मेरी डॉक्यूमेंट्रीज है ना, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। यू जस्ट सी देम, एवरी डॉक्यूमेंट्रीज आपको लगेगी कि अगेंस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन कोई अगेंस्ट गवर्नमेंट है ही नहीं। वो सारे जो है वो उनको ये जो आंखें हैं वो खोल रहे हैं उनको कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आप और सोल्यूशन क्या क्या है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है अब लोकल एक्सपर्ट्स को सोल्यूशन बता देंगे। तो 3 वीडियोस हैं टोटल में, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। तो सो वी विल गो टू नाउ वीडियोस ऑन। यस, जब तक आप वीडियो दिखा रहे हैं, मानसी वाज सेइंग समथिंग। यस मानसी, आप आई वाज सेइंग कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ साइंस होता है जब एक्सपर्ट्स को बुला के हम प्रोजेक्ट करते हैं और करोड़ों रुपए लगते हैं, और जब हम लोकल एक्टिविस्ट और लोकल डॉक्यूमेंट्रीज अपना कुछ काम करके बनाना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग ही नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इससे आपको मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैम, कि जो भी मैं मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है जिसकी फंडिंग मुझे डिपार्टमेंट ने की है, मगर जो जितना मुझे शौक था ना, जैसे विजुअल्स मुझे चाहिए, आपको पता है डिपार्टमेंट में कैमरा मैन या बाकी वो बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल के काम में। तो आई वाज यूटिलाइजिंग माय संडेज एंड हॉलीडेज टू गो माय ओन ऑफ माय ओन, और मैं विजुअल्स लाता था। पैशन है आपका, वो आपका पैशन है। एंड nowadays I am doing on my own everything। तो क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है डिपार्टमेंट के पास, लेकिन ये एक पैशन है, दिस इज माय हॉबी। Okay, we can relate with it. We can relate with it because W for W is also we are doing by passion. Or at least say so. Yes. But that
पहले से. We all want to save Dal, or at least say so, but that doesn't seem to be happening anytime soon. Our aim should be to conserve as much area as is left and then conserve it in a scientific, sustainable manner so that for future generations we have something to offer. And we have an asset created. Rather than leave it to decay or leave it to get silted up, as we have done for Gilsar and Kushalsar, we have nearly lost those lakes. For that matter, even Achar Lake also, a lot of it has been encroached upon. So if encroachments are allowed to continue, the lake areas will shrink. With a huge population of people on all sides of the lake, be it the western side or the eastern side or all other sides, all around the lake, there is a huge population of Srinagar city that resides. And then we also have Dal dwellers who live inside the lake, 58 habitations that are inside the lake. So it is quite evident, it's obvious that we will have some kind of pollution, and it is affected by human intervention. That let us define the lake boundaries and let us conserve that defined lake boundary. Let's not allow any encroachment beyond that. Now we will move to another. This is Almitra Patel. She is giving some this solution. Phosphorus is the yes. Now the another lady, she is Almitra Patel. She is basically an expert, solid waste management expert. जो पहली बार कश्मीर आई थी तो जो मैंने solid waste management पे एक documentary बनाई है, that too was so different क्योंकि तब तक सब लोगों को पता था कि ये कश्मीर जो वादी है ये जन्नत है, लेकिन फिर जब हाईकोर्ट वाले जब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा जो ये कश्मीर है ये सॉलिड वेस्ट, इसको भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है. तो उन्होंने उसे कहा कि ये वहां का इतना है, वो तो जन्नत बेनजीर है. तो उन्होंने फिर मेरी डॉक्यूमेंट्री उसको दिखाई. जब मेरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने देखी तो उन्होंने बताया कि दिस इज नॉट अ हेवन ऑन अर्थ, दिस इज नाउ गार्बेज वैली. तो जो ये अलमित्रा पटेल है, ये फॉर्चुनेटली उस वक्त यहाँ पे आई थी, तो उनकी भी मैंने उसमें बाइट्स लिए हैं और मे बी नेक्स्ट किसी दिन हम वो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द बिग इशू. बट अगर हम अच्छी तरह से सॉलिड वेस्ट को मैन्यूअर के तौर ले जाएं या सेग्रीगेशन एट सोर्स, तो वो फिर हमारे लिए रिसोर्स बनेगा, नॉट एन इशू. तो वही अब इस डल के बारे में, तो क्योंकि मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा डल के बारे में, तो उन्होंने बताया, तो आप भी वो देख लीजिए. Phosphorus is the limiting nutrient. Are you able to watch this? Yes, it was okay. Let it go. Phosphorus is the limiting nutrient for water weeds. They discovered in the 1960s the reason for Lake Erie, one of the Great Lakes between US and Canada, turning completely green with algae and water plants, which sink to the bottom, die, use up all the oxygen. So the fish die without oxygen and the lakes become dead. So after a long battle and, public education and court cases, they were able to make a treaty and get all the detergent companies to limit the phosphorus in their detergent, which was coming into the lake and feeding the water weeds. So what we urgently need, and especially in a state like Kashmir, which is full of water bodies and surface waters, is that we should have only low phosphorus detergents. Before that, the public needs to know what is the phosphorus content in the detergents which they're using. So the first and immediate thing, without disturbing anybody, is to make a law, just as you're supposed to put on a medicine packet, what are the contents, in food packets, what are the contents of jams and so on. We should similarly have labeling to show what is the phosphorus content of detergents and whether
the surfactants, the foam making items in that are biodegradable or not. First, labeling. Then we educate the public. If you want to save your lakes, buy low phosphorus detergents. When the market sees that the customers are going for low phosphorus, they will themselves come in line. Because in India, 80% of the detergent market is controlled by three major multinational companies, Lever, Procter & Gamble, and so on. And they are making low phosphorus detergent in North America and Europe, where the laws are in place. We don't have the laws, so they continue to make cheap, high phosphorus detergents and don't care what happens to the Indian environment. We need to limit the phosphorus in detergents at the national level. उन्होंने हमें नेशनल पॉलिसी का वो दे दिया, मैंडेट दे दिया. We need to have low phosphorus. This should be the mandate. Actually, first lake movement by the women in the world is Lake Diva movement, and that was about no soap in the house to keep the lake clean. It is the largest movement of our lake cleaning in the world even today. Okay, and all the women did was really run out and go home to door and talk about no soaps, and they now all use organic soaps around there, and that's in Japan, huh? So we need that kind of movements now. So यही मैंने एक परसों जब मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता चला कि मैंने देखा कि ये भी एक important issue है. There are so many things. एक और बाइट थी, that was of Professor Mole. He is the solid waste management expert for so many countries. But maybe you will view his comments in my solid waste management documentary, which I will share with you. तो वो कितने अच्छे तरीके से लोगों को समझाता है कि कैसे हम solid waste को एक resource बना सकते हैं. So now we will move to the last video clip. This is the final message, and plus this particular film, it was basically dedicated to one person, a friend of mine. He was an employee in University of Kashmir itself. लेकिन retirement के बाद सिर्फ 1 साल या 2 साल के बाद वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि वो ill था, बहुत बीमार था उसके बाद. तो ये डॉक्यूमेंट्री जो मैं उसी को डेडिकेट करता हूँ. क्योंकि डेडिकेट क्यों करता हूँ? Why? There is a basic reason behind that. क्योंकि मैंने he was an artist actually. आप अभी इसकी थोड़ा बहुत उसमें देखेंगे, आर्टिस्टिक, उसने कितना आर्टिस्टिक के व्यू के थ्रू डल लेक को किया था कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें. तो कभी मैं उस पे भी अलग जाऊंगा कि उस पे हम एक अलग ये बना सकते हैं, क्योंकि उसने इतने सारे मेरे साथ शेयर किए, क्योंकि मैं उसको बताता था कि आई वांट टू यूज दीज एंड जो आपके आर्टिस्टिक व्यूज हैं इन माय डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि आपने ऐसे इतने अच्छे तरीके से डल लेक को, आप भी वो भी पसंद करते थे कि डल लेक बचना चाहिए, लेकिन ही मिस्ड द चांस. तो वही मैसेज इसमें है, और दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू हिम. तो प्लीज हैव अ वॉच फाइनल this documentary. Sure. We also need to keep time. Yes, we are. Dal Development Authority आई करने यक लावड़ा बनान छे. तो ताऊ त्योर Dal पानिस खसियतस मज शूज शोबदार त खसी. If you look at the problems of the Dal Lake, we have failed to provide a vision for the restoration of this lake. So there have been ad hoc measures here and there, and they have led us to nowhere. That's a fact. The present state of affairs is screaming loudly that we are headed to the doom of Dal. And with it, the doom of Zuna's family and many like hers is inevitable. ये उसका आर्टिस्टिक है सारा. ये उसी का है सारा.
So this was all from my side. It's really mind-blowing, Rasid. It's really mind-blowing. Thank you so much for doing all this hard work and bringing Yeah. us. Make us Thank you so speechless. much. Thank you Feeling so like, much. yeah, what we thought about Dal and what actually it is. Thank you so much, Rasid. Thank you, Anuja. So Monica has a question. we didn't know, like, Monica has a yeah, question, Sunita. We may take one question. She has a question. Yeah. Yeah. Monica, you may ask your question. Unmute yourself. Okay, she's not unmuting, so maybe we can go ahead. Gopa sir has also a question. So maybe anyone who has a question may quickly ask one question, because we really want to respect our participants. Go ahead, Monica. Yeah. Good evening, everybody. Actually, my question was this: like, we spent so much of money, like in conserving this lake, but is it all done without any kind of research? We're just spending money and just doing it like blind, that we cannot see all this, what Abdul sir has done. Is there anyone who can regulate or who can check that इतना पैसा खर्च हो जा रहा है और उस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, काम भी नहीं हो रहा, इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है? मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं भी तो इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं क्विक तरीके से आपको बता दूंगा कि ये जो डल लेक है ना, इट इज बेसिकली वन सॉर्ट ऑफ बोर्ड बैंक, यू कैन इमेजिन लाइक दैट। क्योंकि मैंने खुद सुना, मतलब क्योंकि इंसान जब तक कुछ सुनता और देखता नहीं है तब तक इंसान को बोलना नहीं चाहिए। बट आई हैव लिसनड इन आवर कन्वोकेशन इटसेल्फ, मतलब कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स जब होता है, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर थे एक बार, तो अब उनका लास्ट मतलब कुछ डेज ही थे चीफ मिनिस्टर के, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं भी इस डल लेक को नहीं बचा सका। यू कैन इमेजिन, बिकॉज ही वाज द ऑनेस्ट। मैं जब तक जहां तक मेरा ताल्लुक है, तो उसने कहा कि मैं भी इस डल लेक को नहीं बचा सका। सो यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई पीपल आर डूइंग लाइक दैट। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। रिसेंटली देयर वाज अनदर मीटिंग ऑन दीज पर्टिकुलर वाटर बॉडीज, तो मैं वहां पे था, तो मैंने उनको, जो वहां पे अथॉरिटीज थे, मैंने उनको कुछ सजेशंस देनी चाहिए। मतलब मैंने एक सजेशन उनको यही देनी चाहिए कि अगर इसमें अब ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है तो, लेकिन आपको पता है कि कहां कहां से जा रहा है, तो जब तक आप कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे लगाएंगे, but there is a mechanism which I have seen and which I have captured through camera in Delhi itself. अगर दिल्ली में आप गए होंगे, वहां पे IUAC एक मार्ग है, वहां पे एक पुल मतलब फ्लाईओवर बनाया गया है, वहां पे वेटलैंड है, वो बहुत अच्छा, वो चिड़िया वहां पे, वो एक बहुत अच्छी जगह है वेटलैंड टाइप का। तो वहां पे जब वो पुल गिराया गया, जब वहां पे वो बनाते थे ना वो मतलब फ्लाईओवर, तो वो सारा जो कूड़ा करकट जो बाकी वो वहां पे उस वेटलैंड में चला गया था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको रेस्टोर किया पूरी तरह से, लेकिन फिर वहीं पे एक बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो सीवेज जो सारा जो जाता है वो इसी में जाता था। तो उन्होंने लेकिन क्या किया है, विच आई हैव ब्यूटीफुली कैप्चर्ड, उन्होंने बहुत अच्छा किया। पहले उस वाटर को एक मतलब कुछ घास लगाया है पहले, तो घास के थ्रू वो जाता है पहले पानी, उसके बाद पत्थर रखे हैं स्टून्स, तो फिर वो पानी जो है वो उन पत्थरों में चला जाता है, तो पत्थरों के बाद फिर से घास में चला जाता है, और घास में जब बाहर आ जाता है वो एक क्रिस्टल क्लियर वाटर लगता है, तो तब जाके वो उस वेटलैंड में चला जाता है। तो दिस आई शेयर्ड विद देम, दैट अथॉरिटी, दैट व्हाई कांट यू गो दिस टाइप ऑफ, जब तक आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें बहुत पैसा लगेगा, यू विल गो फॉर द टेंडरिंग दिस एंड दैट, तब तक आप ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स ले लीजिए जिसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग दैट। यू गॉट इट? तो मैम, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज माय मिशन। मैं मतलब हमेशा अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनको, मान लो शाम को मेरे पास फोन होता है ना, तो व्हाट्सएप पे जो मैं देखता हूँ ना, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, और वो उस पे मतलब कोशिश करते हैं अपने तरीके से कि आप इनको ऐसी चीजों को जहां जहां पे जो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज दे हैव सीन माय नाउ दिस पैशन एज वेल एज द रियलिटी अबाउट द इश्यूज। तो अब
तो मतलब एक एक करके वो एक एक इशू पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये एक वाटर बॉडी है वो तकरीबन 9 lakh migratory birds were visiting every year to that particular wetland. But before 2-3 years back उसमें एक फ्लड चैनल बनाई गई जो बहुत डीप ड्रेजिंग की गई। तो उस वक्त ये कंसिडर नहीं किया गया कि ये एक वेटलैंड को पानी देता है। तो तब से लेकर उस वेटलैंड में पानी आता ही नहीं है। वो अब एक रेगिस्तान जैसा बन चुका है जिसके मैंने पूरा कैप्चर किया है। उसमें गाड़ियां चलती हैं। इमेजिन, एंड दैट इज द रामसर साइट जो आप बातें कर रहे हैं ना मैम, यू आर टॉकिंग अबाउट द रामसर साइट्स। मैं अब ये क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि रामसर साइट क्या वो फिर देखते नहीं है कि रामसर साइट अगर हमें किसी को दिया है तो उसकी हालत क्या है? दे शुड हैव गेट द रिपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज एटलीस्ट एवरी 3 months कि अगर हम रामसर साइट किसी को देते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इट or something like that? Why people like me are crying, or the locals are crying for that particular water body from last 3 years? Now I am on it from last 3 years and I am visualizing and showcasing that visuals to authorities and now they are working on it. लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे आप जैसे लोग हैं, अगर आप हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि आप देखो एक साइड से मेरी ड्यूटी भी है, तो 5 days a week I am supposed to be इन द डिपार्टमेंट। इस वक्त भी मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे साथ एक जहाँ पे अदरवाइज 5 PM पे ये बंद होना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके साथ यहाँ पे बात करनी है तो वो यहाँ पे हमारे लिए बैठ गए। तो लेकिन ये मसला है कि मेरे साथ यही मसला है कि 2 दिन मेरे सिर्फ बचते हैं, सैटरडे एंड संडे। और सैटरडे मैंने इन इश्यूज के लिए रखा है, while I am going all alone with my camera, getting the footage, then showcasing to the government, and only one day, that is Sunday, which I have kept for the family. So imagine, ये मतलब लेकिन अब अगर आप जैसे लोग अगर मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट के पास जाना भी पड़ता है। लेकिन अगर एक ऐसे अथॉरिटी कोई आ जाएंगे, आप जैसे लोग मुझे हेल्प करेंगे, तो वी कैन गो अहेड आवरसेल्व्स। क्योंकि मुझे पता है कि इन वाटर बॉडीज, इन वेटलैंड्स या जो बाकी फॉरेस्ट्स हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, एंड दैट टू विद अ स्मॉल अमाउंट। जो ये अरबों रुपये खर्च करते हैं तो फिर उसका हिसाब ही नहीं है, और वाटर बॉडी वैसी की वैसी है। लेकिन आप जैसे लोग अगर मुझे साथ दे देंगे, and we will be having such मतलब पायलट प्रोजेक्ट्स जिसे हम गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि देखो इस स्मॉल पेनी में हमने ये वाटर बॉडी रेस्टोर किया है, तो व्हाई कांट यू? तो ये एक एग्जांपल बन जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, उसी के बाद मैं बंद करूंगा। रिसेंटली आई वाज इन गोवा where my documentary on climate change was showcased. Then one of the expert, he was jury member as well, because I got the best second best documentary award there. तो उन्होंने कहा कि why you are not making the documentary on Ganga also? तो मैंने कहा कि मतलब उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री को आज तक देखा है, तो वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आप ऐसी चीजें लाते हो गवर्नमेंट के पास जो सचमुच उस पर काम करने की जरूरत है। तो अगर आप मुझे साथ दे देंगे ऐसे प्रयोगों में, आपको दिखा दूंगा कुछ ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स जो एक मिसाल बन के रखेंगे, ताकि ये वेबिनार्स या फोटोशूट खत्म हो जाएगा, हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. Does anyone from the guests want to ask or give any comments or feedback before we close? No, I only want to wish, this is Manika here, I only want to wish the gentleman more power, and I hope that we together with him are able to realize his vision for Kashmir. Yes. Amen, Manika. Manika is from Jammu and she really feels so. आपका जो हमने जो दर्द देखा अभी डल लेक का और वहाँ के सब लोगों का, ये बहुत ही दिल छू लेने वाला था, बहुत ही डिस्टर्बिंग था। बट थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ब्यूटीफुली एक अकेले लोन वॉरियर बनके इतने अच्छे से सब जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सामने बैठ के वो वाद विवाद कर रहे हैं, वो इट वाज अ ब्यूटीफुल एडिट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, एंड सब लोगों की तरफ से I thank you. Dr. Rajkumari Sunita, would you like to share your comments?
it's just our short concluding remark. Like, thank you, Abdul Rashid, once again. Thank you, Anuja, and thanks all for joining today. Please do join us next time on Friday Water session on October 14th. We will have a water book reading with author Nandini Oza, The Struggle for Narmada, an oral history of the Narmada Bachao Andolan by Adivasi leaders Kesab Bhau and Keval Singh Basagar. So we also request you to join us for the next water talk session on 1st Friday of November. We see you next month on 4th November discussing yet another film. Please follow us on our social media handles for updates on the sessions. So thank you all and have a great evening. Thank you once again, Rashid. Thank you so much. एक चीज जाते मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री जब YouTube पे एक कनाडा में देखा एक ने, he is a कश्मीरी पंडित, but उसकी फैमिली अब वहाँ पे रह रही है। तो when he saw the condition of this particular lady, जो इसमें बूढ़ी औरत है, क्योंकि आपने सारा उसका नहीं देखा, then he called me in the evening कि I want to help her. तो जब मैं कश्मीर आ जाऊंगा तो मैं उसको हेल्प करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर ही केम टू कश्मीर, बट जो वो बूढ़ी औरत थी वो इस दुनिया में नहीं थी। तो दिस वाज अनफॉर्चुनेट। तो क्या करेंगे, लाइफ ऐसी ही है। तो मतलब को बहुत सारे ऐसे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। सो ऑल द पीपल कैन ज्वाइन मी और दिस। तो मेरा ईमेल एड्रेस भी अगर किसी को चाहिए, abdulrashid.ku13@gmail.com, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर माय ऑल डॉक्यूमेंट्रीज टू दीज ऑर्गेनाइजर्स। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अच्छी तरह से ये एक ऐसा बना दिया, क्योंकि जब मैस होता है ना, जब डिस्कशन में 2-4 लोग आते हैं तो एक इंसान फिर अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है कि मुझे बताना क्या है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड देम दैट आई शुड बी गिवन alone this platform so that I can be able to showcase my ability to you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Salute to your passion. मैं ये लास्ट में ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारा विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल है, ये सारे प्रदेशों में है, और हमारे पास JNK में भी विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल है। डॉक्टर हमारा प्रेसिडेंट है, तो मैं उनको कनेक्ट करूंगी आपसे। वो एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका मुझे अपॉलजी आया है, तो हम आपको उनसे कनेक्ट करेंगे। और फिर वाटर रिसोर्स काउंसिल में हम यही करना चाहते हैं कि जो औरतें जो हैं वाटर लीडर्स हैं, हम उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं कि सिर्फ मेन ही हैं, लेकिन आपके साथ काम करने में चाहे मेन हो या विमेन हो, everyone is equal. So we are really happy that आपने इतना brave forward ये step लिया, और हम हमेशा आपके दूसरे फिल्म्स और वाटर, तो इतने सारे स्टेट्स में हर किसी के पास प्रॉब्लम है कि हर कोई आपको बोलेगा प्लीज आइए और फिल्म बनाइए। So we'll be happy to have your help. Thank you. Thank you so much. अब आपने, क्योंकि आपने औरतों की बात की ना, क्योंकि मुझे recently I made one documentary on solo biker. She is a solo biker from Maharashtra, Pune. तो आप imagine कर सकते हैं, she is a biker, she is an engineer also. तो maybe I will share that also with you. तो आप खुद ही आपको पता चलेगा कि औरत का जो मुकाम है वो अकेली नहीं होती है, वो भी जब निकलती है किसी रास्ते पे वो भी बहुत कुछ कर सकती है। So there should be not this gender discrimination. So you should always remain brave that we are also like men. So you can do that. Thank you so much. And men are also like women. He is really feministic. हम सब बराबर हैं, ये हम तो सोचते हैं, लेकिन बाकियों को भी सोचना है अब। So take care and all the best.